proposals to fit the Advanced Short-Range Air-to-Air Missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western borders day and night. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. All right, welcome back, friends. And in fact, let's begin this bulletin with a breaking news development on the Mumbai terror front, where CCTV footage has come out of the stabbing, the Kalma stabbing that took place in the Mira Bhayandar area. And let's cut to those visuals. A gruesome footage there of the attack panning out at 4 a.m., around 4 a.m. in the morning in the Naya Nagar area of Mira Bhayandar, suburb of Mumbai. Exclusive video there of the accused Zubair Ansari attacking one of the two guards as the other guard looks askance, not knowing what's happening. And then in the melee, the accused tries to run away. He actually runs away and is later caught by the police. The attacker is seen brandishing a knife while the security guards appear to be fleeing for their lives. And the accused chases them, stabs them, and then runs away himself. These pictures are accessed by Satya Prakash. We'll get him live from Mumbai. In fact, we have Satya Prakash live with us. For more on this, horrific pictures there, Satya Prakash, of the Mumbai terror attack. What are the cops telling you about the probe till now? These pictures, of course, are good evidence. But what about the indoctrination? What is the source of this radicalization of Zubair Ansari? देखिए अभिषेक, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया और वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से जो आरोपी है जुबेर है उस अंसारी जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह से राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो के ऊपर अटैक कर रहा है। यह वीडियो जो है बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने वीडियो बनाया है और दिख रहा है साफ तौर से किस तरह से आरोपी जुबेर अंसारी किस तरह से अटैक कर रहा है, चाकू से हमला कर रहा है, जो साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से अटैक कर रहा है, क्योंकि गेट पे ही ये वाकया हुआ था और गेट पे ही वाकया होने के बाद ये तस्वीरें जो है सामने बिल्डिंग में मौजूद एक शख्स ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैप्चर किया है और जो वीडियो आया है सामने साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से हमला किया है। जिस तरह से जुबेर अंसारी ने पहले नाम पूछा, धर्म पूछा, इसके बाद बोला कलमा पढ़ो, इसके बाद कहीं कहीं जिस तरह से हमला किया, कहीं के साफ तौर से महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है, एनआईए भी जांच कर रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आईएसआईएस के साथ संबंध मिले हैं, लिंक जुड़ता जा रहा है और जिस तरह से उसके पास से नोट्स मिले हैं जिसमें जिहाद और आईएसआईएस के बारे में और कई ऐसी चीजें मिले जो संदिग्ध चीजें हैं, लैपटॉप के अंदर कई चीजें मिले हैं, मोबाइल फोन के अंदर मिले, यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा था, जो बार बार वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, सारी चीजें कहीं कहीं आतंकी जो नेटवर्क है उससे कहीं कहीं संबंध होता हुआ जुड़ रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है और जो वीडियो आया है सामने साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से आरोपी जुबेर अंसारी जिस तरह से दो सुरक्षा गार्डों के ऊपर हमला कर रहा है क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है। साफ तौर से तस्वीरें सामने आया है कि जिस तरह से ये हमला किया गया है, कहीं कहीं कोशिश किया गया कि आप कलमा पढ़ो तब जाके आपके ऊपर हमला नहीं किया गया। जिस तरह से वहां पे अंदर जो केबिन बना था, केबिन के अंदर जिस तरह से घुस के वहां मारने की कोशिश किया गया है, तो इन सारी चीजों को लेकर महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है। जी, इस वीडियो में अटैकर दिख रहा है और अटैकर के हाथ में एक चाकू है, वो तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे।
और ये जो वीडियो शूट की है, कितने बजे को शूट किया था, कहाँ पे हुआ था? सत्यप्रकाश, कितने लोग थे वहाँ पे आसपास? देखिए निरंजन, ये घटना जो है सोमवार की सुबह 4 बजे की है और सुबह ये जो आरोपी जुबेर अंसारी है ये वहां से जा रहा था। ये जो है Exclusive. घटना जिस जगह हुई नया नगर का वीडियो है। और नया नगर जिस जगह पे वहां पे गार्ड में जो केबिन है वहां पे मौजूद था और सुबह का वक्त था, कुछ लोग वॉकिंग करने के लिए जा रहे थे और जो ये शख्स आता है पहले पूछता है, एक रास्ता पूछता है, इसके बाद नाम पूछता है, फिर पूछता है कौन से धर्म को हो, इसके बाद बोलता है कलमा पढ़ो नहीं तो चाकू से मार दूंगा। जब सुरक्षा गार्डों ने कलमा पढ़ने से इनकार किया और जिस तरह से पुलिस के स्टेटमेंट में भी ये बात सुब्रतो जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसने बताया है कि जिस तरह से वाकया किया गया, जिस तरह से कलमा पढ़ने के लिए जबरदस्ती बोला गया, चाकू से हमला किया गया, इन सारी चीजों को पुलिस के स्टेटमेंट में भी दिया गया है। तो फिलहाल कहीं न कहीं महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है, एनआईए भी जांच कर रही है और थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र एटीएस की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। निरंजन, और इन्होंने क्या बताया था? ये पूरा जो साफ साफ कहा था, हमारे पास पूरा अकाउंट है। विक्टिम को जो पूछा था, he asked the victim, first he asked the victim which side is the mosque, he asked for directions to the mosque, and then उसने पूछा कि आप क्या एक हिंदू हो, और उसके बाद विक्टिम को पूछा कि अगर हिंदू नहीं हो तो कलमा पढ़ लो, एंड देन अटैक हुआ था। कितने लोगों को बोला था ये? देखिए निरंजन, ये घटना जब सोमवार के सुबह 4 बजे घटी, उस समय जो है 2 गार्ड मौजूद थे, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो मौजूद थे। दोनों गार्ड वहां मौजूद थे। ये शख्स जो जुबेर अंसारी जो आरोपी है वहां पहुंचता है, पहले नाम पूछता है, फिर पूछता है कौन से धर्म को, फिर बोलता है, फिर एक बार वहां से चला जाता है, फिर दोबारा रिटर्न आता है, बोलता है कि कलमा पढ़ो, चाकू दिखाता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती कलमा पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों हिंदू जो गार्ड थे उन्होंने कलमा पढ़ने से इनकार किया, जिसके बाद यह शख्स ने चाकू से हमला किया। जो सीसीटीवी में आया है, जो ये वीडियो में आया है, कहीं साफ तौर से दिख रहा है कि जो सुब्रतो ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट काफी हमारे पास है, उसमें साफ तौर से पुलिस के स्टेटमेंट कहा गया है कि हिंदू होने की वजह से कहीं न कहीं जो जुबेर अंसारी है जो आरोपी है, उसने हमला किया, क्योंकि मैंने कलमा नहीं पढ़ा इसलिए हमला किया। फिलहाल जो दोनों पीड़ित है, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों का इलाज चल रहा है। लगातार महाराष्ट्र एटीएस की टीम पहुंची हुई है, एनआईए की टीम पहुंची हुई है और लगातार इस मामले की जांच कर रही है। निरंजन, इसके बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैज सेड दैट ही सीम्स टू हैव बीन अ सेल्फ रेडिकलाइज्ड पर्सन। लोन वुल्फ था, आईसिस लीनिंग था, एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग। तो इसके बारे में जानकारी क्या है? यूएस रिटर्न था, यूएस से वापस आके क्या किया था इन्होंने? व्हाट वाज ही डूइंग सिंस ही केम बैक फ्रॉम द यूएस? कहाँ पे रहता था, क्या करता था? व्हाट डू यू नो अबाउट हिज बैकग्राउंड? देखिए निरंजन, जो जुबेर अंसारी जो आरोपी है, ये शख्स जो है अमेरिका में इसके परिवार रहते हैं और अमेरिका में कई सालों से रह रहा था। वो 1 साल से यहाँ पे मीरा रोड में आया था, मीरा रोड में ये अकेले रह रहा था। थोड़ी देर पहले हम जब उसके घर पे गए थे तो वहां पे ऐसे नोट्स बरामद हुए जो कि काफी संदेह है, कट्टरता साफ तौर से दिख रहा है। उसमें नोट्स में लिखा गया है, जो दरवाजे पे लिखा गया है कि अगर आपको सलाम करना होगा, अंदर आके कलमा पढ़ना होगा, तभी आप अंदर आ सकते हैं। गैर हिंदू या गैर मुस्लिम अंदर नहीं आ सकते। दरवाजे के बाहर साफ तौर से लिखा हुआ। तो कहीं कहीं कट्टरता साफ तौर से देखने को मिला है। और जुबेर अंसारी साफ तौर से जो महाराष्ट्र एटीएस की जांच में अभी तक सामने आया, जो बयान में सामने आया कि जो दोनों जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जो बयान दिए उसमें साफ साफ कहा है कि हिंदू होने की वजह से उनके ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। और जिस तरह से ये जो आरोपी है, इसका लिंक कहीं कहीं आईएस के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार वो सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा था, आईएस के बारे में वीडियो देख रहा था। और जो नोट्स मिले उसमें जिहाद के बारे में है, साथ ही किस तरह से अटैक करना है, आईएसआई के बारे में है। तो कई ऐसी सारी चीजें हैं जो महाराष्ट्र एटीएस को मिली है। लैपटॉप के अंदर कई ऐसी चीजें मिली है, संदिग्ध चीजें मिली है। मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है, उसके अंदर कई ऐसी चीजें। तो फिलहाल कई ऐसी चीजें मिली है जिसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है। निरंजन, Okay, ladies and gentlemen, Satyaprakash is there right outside Mumbai. That's Mira Road, where the attacker, there you can see him attacking the victim. There are several people seen there, and he's seen running away from that spot right outside Mumbai. That's the video shot by someone
who lived in that area. It seems to be a video that was shot from the terrace. And this is the only video that we have so far of the attack that took place. There are allegedly some CCTV videos available as well. We should be able to get those CCTV videos, but take a look at this. The first video of the attack. The attacker, Zubair, asked for directions to a mosque. Look at him. You can see him have a go with a knife in his hand. He was seen brandishing a knife. And then he sees attacking this person. This has stabbed 2 victims at least, several times in the back. And asked people for directions to the mosque, asked them for their identity, and then stabbed them when they could not recite a kalma. Now, of course, in the case of Pahalgam, when the terror attack took place, victims were asked for their religion, asked to recite kalma, and if they didn't recite the kalma, they were shot dead. In this case, they were stabbed. We have a report from outside Mumbai. When Satya Prakash went there, he reported from there. We have those reports. Let's see if we have the report. Let's play that out. देखिए, मैं आरोपी जुबेर अंसारी घर के बाहर मौजूद तस्वीरें में दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर एटीएस ने बाकायदा सील किया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महानगर पालिका और नया नगर पुलिस ने इसको सील किया है और साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस का स्टैंप है और इसको घर को सील कर दिया गया है। ये है जुबेर अंसारी के घर। जुबेर अंसारी इसी घर में 1 साल से रह रहा था और अकेले रह रहा था। यहीं से निकला है और यहाँ से कुछ ही दूर पे, लगभग हम कह सकते हैं 150 मीटर दूरी पे है जहाँ पे घटना स्थल है, जहाँ पे जाता है और वहाँ पर गार्डों का नाम पूछता है और नाम पूछने के बाद धर्म पूछता है, कलमा पढ़ने के लिए बोलता है। इसके बाद जो हिंदू गार्ड थे उनके ऊपर चाकू से हमला करता है। फिलहाल एटीएस मामले के लिए जांच कर रही है। तस्वीरें में दिखा रहा हूँ किस तरह से ये घर है और घर के बाहर यहाँ पे बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है। ये नोटिस देखिए किस तरह से यहाँ पे नया नगर पुलिस ने लगाया है, लोकल पुलिस ने लगाया है और इसमें लिखा है जुबेर अंसारी अटक आरोपी, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को। और इसी घर में जुबेर अंसारी रहता था, 1 साल से रहता था और इसके पहले कुरला में रहता था और इसके पहले अमेरिका में रहता था, जो उसका बैकग्राउंड सामने आया है। यहीं से जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाता था जो सामने आया है और जो जिस तरह से ISIS का लिंक आया है, यहाँ से कई ऐसे चीज़ें बरामद हुई जिसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस जाँच कर रही है। फिलहाल ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ नोटिस लगाया गया है, अंदर भी नोटिस लगाया गया है और इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर नया नगर पुलिस और एटीएस ने जुबेर अंसारी के घर को सील कर दिया है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से ये घर को सील किया गया है। जुबेर अंसारी ये इसी घर में रहता था। ISIS का लिंक मिला है, नोट्स मिले हैं, गाजा जो नोट्स मिले उसमें गाजा लिखा हुआ है। यहाँ तक कि IS का भी संबंध, कई ऐसे तार मिले हुए हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है। फिलहाल लगातार महाराष्ट्र एटीएस की टीम जुबेर अंसारी से पूछताछ कर रही है और साथ ही कई लोग से अभी तक पूछताछ कर चुकी है। मीरा रोड के नया नगर में इसी जगह पर आरोपी जुबेर अंसारी ने 2 सुरक्षा गार्ड पर अटैक किया था। नाम पूछा, धर्म पूछा। इसके बाद आरोपी जुबेर अंसारी ने तुरंत ही जो सुरक्षा गार्ड थे उनके ऊपर हमला किया। यहाँ तक कि जुबेर अंसारी जो है इसी केबिन में एक सुरक्षा गार्ड को अंदर ले गया, चाकू दिखाया और कहा कि कलमा पढ़ो। जब सुरक्षा गार्ड ने कलमा पढ़ने से इनकार किया, उसके बाद अटैक कर दिया। यही घटना है, सोमवार की सुबह की घटना है। यहाँ पे जुबेर अंसारी जो आरोपी है इधर आता है और जो सुरक्षा गार्ड है उनसे पूछता है कि मस्जिद जाने का रास्ता कौन है। सुरक्षा गार्डों ने मस्जिद जाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन आरोपी जुबेर अंसारी फिर से वापस आता है और जो गार्ड यहाँ पे राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो यहाँ पे मौजूद थे उनसे नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, धर्म क्या है। और फिर इसके बाद नाम और धर्म पूछने के बाद यहीं पर अंदर जो केबिन बना है, केबिन में अंदर एक सुरक्षा गार्ड को अंदर ले जाता है और कहता है कि कलमा पढ़ो। सुरक्षा गार्डों ने कलमा पढ़ने से इनकार किया, जिसके बाद आरोपी जुबेर अंसारी ने एक सुरक्षा गार्ड के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। दूसरा सुरक्षा गार्ड यहाँ से जो है छुप के भागा, आगे निकल गया। यह घटना होने के बाद तुरंत यहाँ के लोगों ने दोनों सुरक्षा गार्ड को बगल में ही हॉस्पिटल है यहाँ पे भर्ती कराया है। फिलहाल जो जुबेर अंसारी जो आरोपी है उसका लिंक कहीं न कहीं IS से जुड़ता हुआ दिख रहा है। यह भी बात सामने आया है कि जुबेर अंसारी जो आरोपी है वो लगातार ऐसे वीडियो देख रहा था जो IS से जुड़े दिखते थे। ये भी सामने आया है कि जो नोट्स मिले हैं आरोपी जुबेर अंसारी घर से, उसमें भी
कहीं न कहीं आईएस से संबंधित पाए गए हैं। एटीएस ने कई ऐसी चीजें बरामद की है जो आरोपी का संबंध कहीं न कहीं लिंक जुड़ता हुआ आतंकी संगठन आईएस से दिख रहा है। फिलहाल एटीएस जांच कर रही है लगातार इस मामले को लेकर, और अभी तक एटीएस ने 3 जगह पर रेड किया है, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, कई ऐसी चीजें बरामद किया है जो शक के दायरे में है। एटीएस कहना कि लगातार हम इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जुबैर अंसारी के पास से चीजें मिली है, कुछ ऐसे साहित्य मिली है, कहीं न कहीं शक का दायरा बढ़ते जा रहा है। यही जगह है जहां पर घटना हुआ था, सोमवार की सुबह की घटना हुआ था, और यहां पर दोनों गार्ड तैनात थे, नॉर्मल रूप से यहाँ पे हर दिन की तरह यहाँ मौजूद थे। और लेकिन जिस तरह से जुबैर अंसारी यहाँ पे आता है, मस्जिद पूछता है कि मस्जिद किधर है, इसके बाद थोड़ी दूर जाके फिर से रिटर्न आता है और यहाँ पे मौजूद दोनों गार्ड पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन चौंकाने वाली ये बात है कि जिस तरह से आरोपी जुबैर अंसारी काफ़ी पढ़ा लिखा है, अमेरिका में रहा हुआ है, और जो सामने आ रहा है कि वो केमिस्ट्री भी पढ़ाता था ऑनलाइन। ये भी बात आया है कि वो कई जगहों से कई लोगों से संपर्क में जुड़ा था, और इन सारी चीज़ों को लेकर महाराष्ट्र एटीएस लगातार जांच कर रही है। मैं बाहर गया था काम से, तो घर जा रहा था, तो उतने में वॉचमैन अंदर घुसा ना, तो वॉचमैन लोग डरे हुए थे, मेरे को रुकाए, बोले ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैं डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ा, चौकी लेके गया फ़ौरन उसको। फिर उसने पुलिस चौकी में सब बताया। फिर उसने बोला कि किसका हाथ पकड़े थे? पहले वॉचमैन का लिया, क्योंकि जो दूसरा लगा सुबह था वो अंदर छुपा हुआ था, मतलब डर के मारे छुपा था, अंदर बाहर नहीं आ रहा था। तो वॉचमैन ने उन लोगों ने बोले कि वो अंदर ही है, तो मैं उसको ढूंढा, मिला, तो उसको ही पकड़ के मैं चौकी लेके गया। फिर पुलिस वाले लोग ने बोले कि उसको जाके तेम्बा हॉस्पिटल में पहुंचा दो। तेम्बा हॉस्पिटल में पहुंचा के मैं आ गया अपना। उस समय जो राजकुमार थे मिश्रा, उस समय थे वहाँ पे? नहीं, वो टाइम थे उनकी वो सुब्रतो की जान बचाने के लिए उसने उसको भी चाकू मार दिया। ऐसा बोल रहे। अच्छा, कौन बोल रहा था? वॉचमैन लोग ही बोल रहे थे। तो सुब्रतो कहाँ छुपा था? सुब्रतो यहाँ पे बाहर बैठा था। तो बाहर हुआ था पहले, वो अपनी जान बचाते बचाते अंदर भागा। अंदर जो मिश्रा जी करके वो हेड है यहाँ के, उन लोग के हेड है, सुपरवाइजर है। तो उनने इन लोग की जान बचाने के लिए तो उसको भी मार दिया चाकू। उस समय कैसी स्थिति, कैसी उनका हालात था राजकुमार मिश्रा का? वो मैं देखा नहीं। और सुब्रतो का? सुब्रतो को ज्यादा नहीं लगी, थोड़ी एक ही पीठ पे लगी थी खाली। कुछ बोल रहा था सुब्रतो? हाँ, वो बोल रहा था, वो कुछ तो हुआ था, बोल रहा था साइको था, कुछ पागल था, आके मार रहा था। मुफ्ती मंजूर जियाई जॉइनिंग अस लाइव इज द इंटरनेशनल सूफी कारवा हेड। मुफ्ती मंजूर जियाई जी, ये जो तस्वीरें आ रही है, ये देखिए, कोई जुबैर करके अटैक की है मुंबई के बाहर। उन्होंने पहले पूछा कि आपका नाम क्या है, अब मस्जिद का रास्ता कहाँ है, और क्या आप एक हिंदू है, और बोला कि कलमा पढ़ो अगर हिंदू नहीं हो। उसके बाद उन्होंने पूरा चाकू लगा दी। ये क्या हो रहा है? इसको रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, सेल्फ रेडिकलाइजेशन है, ये बता रहे फडणवीस जी। तो आपका रेस्पॉन्स क्या है? बहुत ही भयावह है, और जहां पर एकता की मिसाल माना जाता है मीरा भाईंदर, ऐसे शहर में इस तरीके की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा महाराष्ट्र बहुत ही पीसफुल है और यहाँ पर बड़ी मोहब्बतें हैं आपस में, लोगों में बहुत प्यार है, लेकिन इस तरह की घटना करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग मैं करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे लोगों को या इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं किसी को भी नहीं बख्शेंगी। पूरी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जो बेगुनाह है उसे बिल्कुल छेड़ा भी नहीं जाएगा, लेकिन जो गुनहगार है उसका ठिकाना जो है उसे वहां पर जरूर पहुंचाया जाएगा। फडणवीस सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का, और खुसूसन मीरा भाईंदर पुलिस ने जिस तरीके से रोल अदा किया है, बहुत साइलेंट तरीके से मैनेज किया और फौरन कार्रवाई करके उसको अंदर डाला, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन जैसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जहां भी पनपते हैं, चाहे वो कोई भी शहर हो, कोई भी इलाका हो, और अपने आप को जो लोग मुसलमान ऐसे नाम पर कहते हैं वो धब्बा हैं, और वो मुसलमान के नाम पर इस्लाम को और मुसलमानों को और शरीफ मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग मैं मुफ्ती मंजूर से आई करता हूँ। ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, आप 2022 में आपको पता होगा कि उदयपुर में एक टेलर को मर्डर किया था। कन्हैया लाल शर्मा था उसका नाम, अगर मैं ठीक हूँ तो कन्हैया लाल साहू। बिल्कुल। सर्तन से जुदा बता के उसका they chopped his neck, they killed him। तब भी बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप, रैडिकल मुस्लिम ग्रुप्स बोल रहा हूँ मैं, रैडिकल मुस्लिम ग्रुप्स, उन्होंने कुछ बात भी नहीं की इसके बारे में।
सो अगर मुस्लिम ग्रुप्स, मुस्लिम लीडर्स इसके बारे में चुप रहते हैं तो ये सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा ना। इंटरनेशनल सूफी कारवां का हेड और चीफ मुफ्ती ऑफ मुंबई महाराष्ट्र होने के नाते एक मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने लगातार मीडिया से और लोगों से मुखातब होकर ये बार बार कहा है, सख्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, रेडिकल की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि उसे सोसाइटी में अपने लोगों के बीच में जगह दी जाए। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोग और महाराष्ट्र सीएम इतना स्ट्रांग है कि ऐसे चीजों को पनपने बिल्कुल नहीं देंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई तो होगी। उनसे जुड़े जितने वे लोग हैं, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, जहां पर भी हो, उनको घसीट कर लाया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। ये सिर्फ वातावरण को खराब नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने मुसलमान को होने के नाते मुसलमानों को ही बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि ये देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। इसका मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचता है और इस तरीके के लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश को बदनाम किया, इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया, मुसलमान को बदनाम किया और हमारे जैसे लोग जो पूरे हिंदुस्तान में शरीफ लोग होते हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तो ये तमाशा मारने का काम किया है। इसलिए आज हम सभी एकता के साथ आपके सामने कह रहे हैं कि लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और चिन्हित किया जाएगा ऐसे लोगों को जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है या इनको बैकअप दिया है, इनको फंडिंग की है। वो कौन लोग हैं जो इनको बैकअप दे रहे थे, उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। हमारे भी सोर्सेज लगे हैं और हम इस पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं और अपने तरीकेकार से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि अभी देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी एक टीसीएस ग्रूमिंग गैंग, टीसीएस का एक बड़ा कांड हुआ था नासिक में और इस पे भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा मैं सीधा बोल देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्टैंड ली थी उस पर, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक AIMIM। उन्होंने बता दिया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो जो सच है वो कुछ और है। तो ऐसे फीलिंग है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इन सच मामलों में एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लेते हैं, लेकिन they take a stand based on their religion, based on their voting concerns. उनको सिर्फ वोट से मतलब है। तो आपको क्या कहना है तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली AIMIM और कांग्रेस को? देखिए, ये पार्टियां तो पॉलिटिक्स करती हैं, इनको अपने सत्ता, अपनी सीट, अपने पावर के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से भी अपील करता हूं कि कभी भी किसी ऐसी चीज का सपोर्ट ना करें जो नाहक है, जो गलत है। और गलत का सपोर्ट जो है, अल्लाह ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता है, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हर एक शख्स की श्रद्धा अपने रब पर होती है, तो गलत करने वाले का सपोर्ट कोई भी धर्म का मानने वाला या कोई भी रिलीजियस इस बात का टीच नहीं देता है कि वो किसी गलत करने वाले को, बुरे काम करने वाले को, बेहुदा काम करने वाले को सपोर्ट करने क्या कहे। हम सभी इस बात की अपील करते हैं तमाम पार्टी को, लोगों से, तमाम रिलीजियस स्कॉलर से, कि आपको एकजुट होकर के ये बात कहना होगा कि गलत को गलत कहने का साहस भी रखना पड़ेगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग भी करनी पड़ेगी और किसी भी तरह से, चाहे आपके पॉलिटिकल फायदे हो या ना हो, ऐसे लोगों का खंडन करना चाहिए। Okay, Mufti Manzoor Jiaji ji, thank you for joining us. He's taking a principled stand. He's an international Sufi Karawah head. He's saying that it's wrong, should be condemned, taking a very principled stand there. Thank you very much. He will come under attack, of course, from the radical groups, but he's okay with that. Right thinking people will condemn such an attack. It will have to be condemned, but there will be some who will try and say that Muslims are being targeted. They'll try and give a communal spin to it, and that's where he says it becomes problematic. Taking a short break, ladies and gentlemen. We are back with the details of the Patiala plot. It was a Khalistani terrorist. It appears that there is a Khalistani link to the blast at the railway track. They tried to blow up a track. Pieces of his dismembered body were found almost 500 meters away. The crazy story coming in from Punjab. Details on Republic. Stay tuned. Join International Institute of Hotel Management. Call 983-10-50,000. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला।
The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fights. The Ministry of Defense sent out a request for proposals to fit the Advanced Short-Range Air-to-Air Missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western borders day and night. Earlier upgrades added new radars, engines, and digital cockpits, but the short-range missiles stayed old. Now the ASRAAM brings fire-and-forget technology. Once the pilot locks on and fires, the missile finds the target on its own, even if the jet turns away to dodge enemy fire. It also works with helmet-mounted displays, so the pilot can just look at the enemy plane through the visor and the missile follows the eyes. This high चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे। The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fights. The Ministry of Defense sent out a request for proposals to fit the Advanced Short-Range Air-to-Air Missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western borders day and night. Earlier upgrades added new radars, engines, and digital cockpits, but the short-range missiles stayed old. Now the ASRAAM brings fire-and-forget technology. Once the pilot locks on and fires, the missile finds the target on its own, even if the jet turns away to dodge enemy fire. It also works with helmet-mounted displays, so the pilot can just look at the enemy plane through the visor and the missile follows the eyes.
This high off-bore sight ability lets the jet attack from strange angles without turning the whole plane first. This upgrade matters a lot because the region stays tense. Pakistan flies JF-17 jets with modern PL-10 missiles that reach farther and lock on quicker. China uses even better systems on its J-20 stealth fighters and other planes. In a real dogfight, the old MiG-29 with R-73 could lose the first shot. With ASRAAM, the Indian pilots get longer reach, faster lock, and higher chance to survive. The missile also works well against low-flying drones that are hard to see on radar. Many experts see drone swarms as the new big threat in air wars, and this Hello and a very warm welcome. You're watching Republic TV. I'm Yesu Bharadwaj, and viewers, a Pahalgam-style attack was orchestrated in Mumbai. In fact, we have some exclusive visuals of the moment of that dastardly strike. Same playbook. People asked their religion, asked to recite the kalma, and when they failed to do so, they were stabbed. We're getting you all the details. Here's a check on your headlines for the hour. Take a look. TMC versus BJP over appointment of Uttar Pradesh's top police Ajay Pal Sharma as West Bengal poll observer. TMC says Bengal is no Uttar Pradesh. TMC candidate Jahangir Khan's open death threat to BJP over CRPF deployment across West Bengal. TMC completely nervous after security measures in Bengal begin to stage protest against IPS officer deputed for Bengal polls. In a Pahalgam-style attack, Mumbai man stabs security guard after ISIS-linked material found at accused's home. A Pahalgam-style attack in Maharashtra. Victim reveals he was stabbed after being asked to recite the kalma. Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis hints at a bigger controversy over the Pahalgam-style attack, says thorough investigation is underway. Attempted detonation attack in Patiala on a railway track. Accused identified as Jagrup, whose mutilated body was found about 500 meters away. Storm over RSS at Jamia Millia University. SFI activists protest against RSS centenary event held in campus. Anil Ambani in a bigger trouble now. ED attaches fresh assets worth rupees 3,034 crores. Properties of Reliance Communications and Infra attached. Viewers, now starting first with what's happening in West Bengal. The National Investigation Agency has deployed multiple teams across West Bengal, especially in Kasba, which is very close to the capital in Kolkata. Now remember, this comes after several questionable things were found in the Kasba district. Now remember, this is regarding operations that are being conducted over the recovery of explosives and other security related matters in the poll bound state that heads to the second phase just tomorrow, that is the 29th of April. And now NIA has taken full cognizance. In fact, multiple teams have been deployed across West Bengal, especially with heavy duty security being deployed in Kasba in West Bengal. Those are the visuals of the National Investigation Agency along with the Kolkata police. Now, in a coordinated joint operation, multiple teams have been deployed in Kasba. In fact, joining me live to get us more details is my colleague Harsha. Harsha, you have been seeing every aspect of the election so far in West Bengal. Speak to us about the recent incident that has in fact led to the deployment of NIA teams in Kasba. What unfolded? We know that, a cache of explosives was recovered from Kasba. Speak to us about the details of the matter. Harsha.
Yes, Gesu, you rightly pointed out Kasba is a region which will go for the polls on 29th of April, and this is a very important keeping in mind that how much is the population of that particular area, and also the minorities population is huge in number, and in that place, particular location, police received a tip regarding explosives and the crude bombs and other explosive kind of things to be kept at certain place. And after that, not only the police officials but the NIA immediately reached the spot at Kasba, and not one or two but huge number of the forces from the NIA have been deployed there. The personnel are huge in number, almost 25 to 30 personnel from the NIA immediately reached the spot, and also the checkings were done. Intense checking and raids are being conducted in the Kasba region. If we talk about the Kasba region, the lanes are really narrow there, and also there are many houses which has been chalked out by the NIA officials. There are many houses which have been marked by the NIA that these are the houses where exactly the explosives and the crude elements have been kept up to be used for the election day. And also there has been a small not only the crude bombs but different explosives item as well. Not the huge explosives one, not the grenade kind of the explosives, but yes, but the ones which can create the smoke and fumes during the polling elections, and when it is hurled at the polling booth. Such weapons, explosives, and also the hockey stick, lathis, equipments, all were found from one particular location and house which was marked by the police officers in Kasba region. We have got to know that NIA has recovered all those before the second phase of elections, which is on 29th of April. And this also raises a lot of questions regarding what exactly was the plan which was being hatched by the TMC supporters, or let's say by the local candidates in those regions. Where was this plan to intimidate and to disrupt the elections in second phase? TMC has gone so desperate to win the elections in West Bengal that by hook or crook they are right now in the mode to achieve the poll riggings and the proxy polls, which is said that alleged that this could happen in the second phase of the elections. Back to you. Right, Harsha. Thanks for getting us a lowdown of the situation. Of course, the conversation continues, but we were shifting focus to another breaking development that also comes in from West Bengal. Now, TMC supporters are now agitating in Falta against the IPS officer Ajay Pal Sharma's deployment in West Bengal. Now, in South 24 Praganas in West Bengal, the election observer Ajay Pal Sharma has warned the relatives of TMC's Falta Assembly candidate Jahangir Khan after complaints were floated of voter intimidation. Now, following these complaints, even the CAPF conducted a search march in the Falta Assembly constituency. Now, TMC supporters raised slogans during the flag march. Now, remember, Uttar Pradesh's top cop Ajay Pal Sharma has been brought to West Bengal to control violence, and he's in fact also warned those who are intimidating voters, including TMC's Falta candidate Jahangir Khan. Listen in to his stark warnings that he's been issuing. आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तुम्हारा रजिस्टर होगा ना? आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं, तुम्हारा ऐसे कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ तो नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो? आप FST तो यही एरिया ना? ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया तो FST का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म इतना हल्के ले रहे हो ना? केसेस सबके रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा दीदी। बोल रहा है पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। मैं नहीं पता वो कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है? उनको कहीं तो होगा मोबाइल नंबर। हाँ,
Viewers, in fact, TMC's candidate from Falta, Jahangir Khan, has even issued open death threats against security officials, including the IPS officer who's been deployed, the CAPF personnel who remain deployed to protect the voters in West Bengal. Listen in. জাহাঙ্গীর খান এবং জাহাঙ্গীর খানের টিম ভয় পায়নি এবং আগামী দিনে ভয় পাবে না, সেটা মাথায় রাখতে হবে। আজকে ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় মাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের গঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলের মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। তাই সেই বিজেপি দালাল সিআরপিএফকে বলতে চাই, ক্ষমতা আছে গঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলের মানুষের জনসমুদ্র জনস্রোত দেখে যাক। আমার একটা মায়েরা হলো দুর্গা, দুর্গা রূপে কিভাবে ওষুধকে বধ করতে হয় তারা জানে, একইভাবে বিজেপি দালাল সিআরপিকে কিভাবে জব্দ করতে হয়, কিভাবে টাইট করতে হয় সেটা ভালোভাবে জানে। তাই মায়েরা যখন সঙ্গে আছে, আমার বিশ্বাস ওদের এই ধমকানো চমকানো আমরা মেনে নেব না। তাই আমি চাইব যে আজকে 27 তারিখে 5টায় প্রচার শেষ, তাই হাতে আর তো একটা দিন আছে, আপনার একটা দিন, আর 29 তারিখটা। In fact, viewers, shocking turn of events. You know, TMC has been going out and about and threatening security forces and people who are trying to do their work on the ground and keep the fact in check that everybody can go out and exercise their franchise freely, fearlessly. Now, in these series of events, even TMC spokesperson Riju Datta comes up and he gives an open threat to the IPS officer Ajay Pal Sharma, saying that after the May of 4th, the Bengal TMC unit will take care of him and he won't be able to run even if he wishes to. What kind of brazen attacks has the TMC been raining down on the security forces? This is just one exhibit A of that. Take a look. पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। Viewers, now in a major breakthrough for the Indian security and intelligence agencies. Now, Salim Dola, a high-ranking associate of Dawood Ibrahim, was deported from Turkey to India. He arrived in India just early morning today in Delhi's Technical Airport atop a special charter plane. In fact, he was taken in by the NCRB right when he landed. In fact, he's also expected to be produced in front of the Mumbai police later on. And this is a huge win for India that actually went the Interpol way to get him back to India. He was extradited, he's now been deported, and he's in the hands of the Indian Central Agency. Take a look at this. Salim Dola, drug kingpin who was apprehended in Istanbul, Turkey following a high-stake coordinated operation between Indian and international intelligence wings, arrived at the Delhi Technical Airport today under heavy security.
A Dongri resident, Dola had been operating from abroad after fleeing India nearly a decade ago. Running a multi-state narcotics network is a close aide of Dawood Ibrahim. Upon his arrival in the national capital, Dola was immediately taken into custody by intelligence officials and is currently undergoing intensive interrogation at an undisclosed location. Authorities seized a Kuwaiti ID and a Bulgarian passport from Salim Dola, exposing the sophisticated alias used to facilitate his international movement. A known figure to narcotics agencies, Dola has been linked to international cartels and was first arrested in 1998 with 40 kgs of mandrax at Mumbai airport. Investigations indicate that Dola had established a complex trafficking network utilizing container transport, where illicit shipments were meticulously disguised as legitimate commercial goods to bypass port security. He is expected to be handed over to the Mumbai police or the NCB shortly for further proceedings related to multiple pending cases involving drug trafficking and money laundering. Viewers, now quickly shifting focus to another breaking development that comes in from the Patiala blast case. The Khalistan terrorist organization, which is KTF, has taken full responsibility of the Patiala rail track blast case. Now, remember, KTF, the Khalistan Tiger Force, claimed responsibility through a social media post. Jaswinder Multani, who is in Germany, in fact, claimed responsibility on behalf of the KTF, the Khalistan Tiger Force. Multani, remember, is also a key accused in a 2022 case where an माता विशालाक्षी, माता संकटा और मां गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है। ऐसे में आप सभी बहनों बेटियों के इस समागम ने इस अवसर को बहुत दिव्य बना दिया है। हम काशी के ई भूमि पर आप सब माई बहन के, काशी के बिटियन के प्रणाम करत है। साथियों, आज का ये अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव तो है ही। थोड़ी देर पहले ही यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें काशी में हर प्रकार के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। साथ ही काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले काम भी है। कुछ देर पहले 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई, ये दोनों अमृत भारत ट्रेनें यूपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। अब मुंबई पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने का एक और आधुनिक विकल्प मिल गया है। मैं इस शुभ आरंभ के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं।
काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है, इससे समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। अतीत में बहनों बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। काशी की आप बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी हैं। आपने भी कितनी ही चुनौतियों का सामना किया है। बेटियों को अक्सर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था। तुम ये करके क्या करोगी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तू का करवू? तोहे का जरूरत है? तू चुप रह, ये काम तो से ना हो पाई। और कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, सीधे फरमान सुनाया जाता था, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। साथियों, ऐसी परिस्थितियां सिर्फ काशी की बहनों के लिए रही हो ऐसा नहीं है। देश की अधिकतर बहन बेटियों के ऐसे अनुभव रहे हैं और इसको सहज मान लिया जाता था। इसलिए मैं जब 25 साल पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। उस दौरान बेटियों के लिए समर्पित 2 बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी। एक थी शाला प्रवेशोत्सव, स्कूल में बच्चियों का एडमिशन, ताकि बेटियां ज्यादा संख्या में स्कूल पहुंचे, बीच में ही उनका स्कूल न छूटे। और दूसरी थी मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि, ताकि बेटियों की फीस में उनकी मदद की जा सके। साथियों, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, इज्जत घर बने, 30 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक खाते खुले, 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया। यानी अनेक बड़ी योजनाओं के केंद्र में बहनों बेटियों को रखा गया। साथियों, 2 साल पहले यहां बनारस में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उस समय एक ही महीने में
यहां काशी में 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की शिक्षा में और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना से बेटियों की पढ़ाई को बल मिला है और मुद्रा योजना से बेटियों की कमाई सुनिश्चित हुई है। वहीं मातृवंदन योजना और आयुष्मान भारत योजना से बहनों बेटियों की दवाई का इंतजाम किया गया है। साथियों, पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ ही करोड़ों बहनों के नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई। पीएम आवास योजना के ज्यादातर घर भी बहनों के नाम पर होते हैं। आज हमार माई बहन सही में अपने घर का मलकिन बनत हैं। साथियों, हमारी सरकार का पूरा जोर बहनों की सुविधा और सुरक्षा पर रहा है। यही दो चीजें हैं जो सशक्तिकरण की नींव मजबूत करती है। आपने यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे। कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। साथियों, भारतीय न्याय संहिता ने भी बहनों बेटियों को सुरक्षा का नया भरोसा दिया है। इसके तहत महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों में तेजी से फैसले आने लगे हैं। इसी प्रकार महिला थानों और परामर्श केंद्रों का नेटवर्क भी निरंतर बढ़ रहा है। आज यहां भी एक महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र के भवन पर काम शुरू हुआ है। ऐसे कदम बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। साथियों, जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद। Tonight at 7:30 p.m. on Super Prime Time with me, Gesu Bharadwaj, a Pahalgam-style attack orchestrated in Mumbai. We'll get you all the details on that. In fact, a major tiff between the TMC and the BJP over the deployment of Uttar Pradesh's IPS officer Ajay Pal Sharma, and also Iran's 3 conditions for truce with the United States that Donald Trump does not seem to be happy with. This and a lot more at 7:30 p.m. with me, Gesu Bharadwaj. प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से MTH का जल जीरा जीरा से जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fights.
the Ministry of Defense sent out a request for proposals to fit the Advanced Short-Range Air-to-Air Missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western borders day and night. Earlier upgrades added new radars, engines, and digital cockpits, but the short-range missiles stayed old. Now the ASRAAM brings fire-and-forget technology. Once the pilot locks on and fires, the missile finds the target on its own, even if the jet turns away to dodge enemy fire. It also works with helmet-mounted displays, so the pilot can just look at the enemy plane through the visor and the missile follows the eyes. This high off-bore sight ability lets the jet attack from strange angles without turning the whole plane first. This upgrade matters a lot because the region stays tense. Pakistan flies JF-17 jets with modern PL-10 missiles that reach farther and lock on quicker. China uses even better systems on its J-20 stealth fighters and other planes. In a real dogfight, the old MiG-29 with R-73 could lose the first shot. With ASRAAM, the Indian pilots get longer reach, faster lock, and higher chance to survive. The missile also works well against low-flying drones that are hard to see on radar. Many experts see drone swarms as the new big threat in air wars, and this upgrade gives the MiG-29 a strong answer. The ASRAAM already proved itself on Indian planes. The Air Force fitted it successfully on the homemade LCA Tejas and the Jaguar fighters. Those tests went smooth, so putting it on the MiG-29 UPG is a natural next step. The request includes new launchers, special tools, testing equipment, and training for ground crews and pilots. Once the work finishes, the whole fleet will get the missiles step by step. This keeps the MiG-29 useful for many more years until newer Indian planes, like more Tejas and the Advanced Medium Combat Aircraft, join in big numbers. Upgrading the existing MiG-29 fleet saves huge money compared to buying fresh fighters from abroad. It also shows a smart way of mixing technology. India still uses Russian planes but adds Western weapons when they fit better. After supply problems from global sanctions, this diversification makes sure the Air Force never runs short of parts or missiles. The MiG-29 UPG with ASRAAM now matches the close combat power of top Western jets like the Eurofighter or Rafale. Pilots who fly the MiG-29 love its speed and quick turns. With the new missile, the welcome viewers, you're watching The Verdict with me, Ishita Mitra on Republic TV. Now viewers, tomorrow at 7 a.m. West Bengal goes to poll for the final phase. But TMC currently is in a panic mode over a UP cop performing his poll duty. Getting you all the updates in the next 30 minutes, but first let's take a look at the top headlines. UP Encounter Specialist Ajaypal Sharma's appointment as observer for Phase 2 polls has sent the TMC into a tizzy. Setback to Mamta on eve of polls as Calcutta High Court refuses to interfere in the appointment of IPS officer Ajaypal Sharma as an observer.
UP encounter specialist Singham gets down to business in Bengal, hunts for TMC goons including Jahangir Shah, warns of severe action against troublemakers. Security cover descends on Bengal ahead of phase 2. CRPF companies conduct domination exercises and marches across sensitive areas. All eyes now on Bengal as the crucial second phase of voting for the assembly election to begin tomorrow at 7 a.m. भवनों का निर्माण हो, हर हुआ और भवानीपुर में किसानों के लिए भंडारण सुविधाएं हो, वृद्धाश्रम हो, महिला छात्रावास हो, ये सब काशी के संवेदनशील विकास का ही प्रमाण है। इन कार्यों से बनारस के लोगों को ही सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। साथियों, काशी की विरासत, यहां की धरोहर को सशक्त करने का अभियान भी निरंतर चल रहा है। संत कबीर स्थली का विकास और नगवा स्थित संत रविदास पार्क का जीर्णोद्धार, ये हमारे इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, हमारी काशी अविनाशी है, ये अनवरत चलने वाला शहर है। इसी तरह विकास का अभियान भी निरंतर गतिमान है। मैं नारी शक्ति का वंदन करते हुए एक बार फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और विकास कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव। Now, viewers, that was Prime Minister Modi, who is on a two-day visit to Kashi, addressing people at a mega rally. In fact, now, viewers, we'll be switching back to the election updates coming to light from the state of West Bengal. In fact, the Prime Minister interacting with workers on ground along with the UP Chief Minister, who's present on the stage. Now, viewers, the final phase of voting is tomorrow in Bengal. Now, on the eve of second phase of polling, the TMC looks really nervous and, in fact, apprehensive as well. The reason for it is the man on your screens. IPS officer from Uttar Pradesh, Ajay Pal Sharma, better known as Singham, for his no-nonsense approach towards law enforcement. Now, UP Singham has been posted as a police observer for the second phase of polling, and this has sent the TMC into a tizzy. So let's break down the entire story for you viewers by starting with who this officer is. All right, officer. All right. In fact, let's start with the details we're getting at this moment. Now, this officer is a 2011 batch IPS officer of UP Kada. He's now been posted as a police observer in the state of West Bengal, and this has essentially sent TMC into a tizzy. In fact, Sharma is an encounter specialist, something that he has been known for tough policing and his no-nonsense approach towards law enforcement. Now, he's been deployed as a police officer for the election duty in the state of West Bengal. Right now, he's in the South 24 Parganas district, and he hails originally from Ludhiana, Punjab. But if you talk about his professional journey, now before becoming an IPS officer, he was in fact a professional doctor. So he switched from being a doctor to becoming an IPS officer in UP Kada. In fact, he was recently promoted to the rank of DIG on January 2025. Now, those are the details when we talk about this man. Now, why are we talking about this man? That's the big question. He is the additional police commissioner
in Prayagraj currently, but now he's posted to West Bengal, and now in fact he has been taking on TMC goons, the troublemakers in the state ahead of the crucial second phase of election. And this is what is causing him to go viral on social media, the way he has been talking to these troublemakers, including TMC candidate Jahangir Shah. Now in fact, viewers, the question is, what has this officer done since arriving in Bengal for the second phase of polling? The answer is swift action and stern warnings. Now, Ajaypal Sharma wasted no time and hit the ground running. He issued firm warnings for the people of South 24 Parganas, the area for which he has been appointed. His sight is set on troublemakers, and he's determined to ensure that no voting is carried out. In fact, no violence takes place in West Bengal in the second phase of polling. He's also not sparing security personnel who are slacking off. Let's now take a look at these crucial videos that have emerged from the election-bound state, specific videos which show that how he has been warning troublemakers and security personnel alike who are working on the ground but have been favouring a TMC. Take a listen. UP Police Officer Dr. Ajaypal Sharma, who is popularly known as Encounter Specialist and Singham in Uttar Pradesh, has been deployed as police observer in the state of West Bengal in South 24 Parganas region for Phase 2 election. Now, a viral video of Ajaypal Sharma is doing rounds on social media, which has grabbed a lot of attention of the political parties and non-political party as well. In a viral video, Dr. Ajaypal Sharma is seen issuing a stern warning to Jahangir and his family members. Jahangir is a TMC candidate after the reports were received that TMC candidates' men were openly threatening and intimidating voters to vote in favor of TMC. Dr. Ajaypal Sharma visited the house of TMC candidate and issued stern warning by stating, "Tell him we will deal it properly if his men continue to threaten the electors. Cry it later or regret it then." Those were the words of Dr. Ajaypal Sharma, on which is grabbing a lot of attention on social media. And after this viral video, some have applauded Ajaypal Sharma for his heroics, while some has criticized UP Chief Minister and Dr. Ajaypal Sharma. BJP IT cell tweeted this video and stated that wasted no time, kept the TMC and the right accused in check. While Maua Moitra, the TMC MP, called Ajaypal Sharma fair and lovely boy, said, "We are the kind who deal it properly with small Fanta or big Fanta." In fact, TMC also tweeted a video targeting UP Chief Minister Yogi Adityanath and officer himself and stated that officers should be kept, their heroics should be kept in check. And also, UP former Chief Minister Akhilesh Yadav called Dr. Ajaypal Sharma, commenting on his viral video, called him the agenda-driven agent of Bharatiya Janata Party. Now, after this video went viral, a lot of talks are happening regarding the deployment of Ajaypal Sharma as a police observer in South 24 Pargana, the region where immense violence was reported earlier in 2021, 2024, in 2023 Panchayat polls as well. If we talk about this morning, Ajaypal Sharma along with the CRPF official was doing rounds for the area domination and conducting the campaigns door to door and telling the voters and electors not to be intimidated by any political party and go out and do a fair choice of their vote whosoever they want to elect. And during the process of the area domination, Ajaypal Sharma and the CRPF officials were gherawed out by the TMC supporters. The slogans were hurled at them. The slogans were "Go back and joy Bangla" by the TMC supporters. This visual has also went viral, where TMC supporters are anti-Ajaypal Sharma and the entire machinery which has been deployed for the second phase majorly in the Diamond Harbour region. If we talk about the overall security for the 29th April phase 2 of the election, 2.5 lakh CRPF officials personnel have been deployed in overall West Bengal for the phase 2 elections. 700 CAPF will stay put in West Bengal for the post-poll situation. So right now, as we see, 29th April is the phase 2. But before that, this encounter specialist Singham from Uttar Pradesh, Dr. Ajaypal Sharma, is grabbing a lot of attention, and not only war of words, but now the political targeting also has started by the TMC and the India Alliance parties against Dr. Ajaypal Sharma on social media. Anil Ambani along with video journalist Atanu for Republic TV.
Now, viewers, the question is, what has this officer done since arriving in Bengal for the second phase of polling? The answer is swift actions and stern warnings. It has come in from Ajay Sharma, who has been going round from street to street, from door to door, wasting no time in hitting the ground running. Now, he's issued a firm warning to the people of South 24 Parganas, the area for which he has been appointed. His side is clear that there should be no violence in the second and the final phase of election. He said that the voting should be carried out smoothly in this election, and he's also not sparing security personnel who are slacking off. Now let's take a look at these crucial videos that have gone viral from the state of West Bengal showing his tough action on the ground. आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ना आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं हमारा ऐसे कह रहा कि 10 लोग हैं यहाँ, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ, तमाशा है क्या? एक महीना हो गया कि नहीं सर मेरा तो घर यहाँ तो नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो, आप एफएसटी तो यही एरिया ना, तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया तो एफएसटी का यही एरिया ना। ये जहांगीर खान का घर कौन सा है उसके अंदर? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म है। मैं बताऊँ इतना हल्के में ले रहे हो ना, केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दौड़ते रहना था दिल्ली। बोल रहा है पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। मैं नहीं पता वो कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है? तो होगा मोबाइल नंबर। Now, viewers, with just a few hours left before the final phase of election in West Bengal, the TMC is completely switching over to panic mode. And this is over the tough action coming in from the UP Cob Ajay Sharma. Now, the TMC has come down to issuing open threats, with the TMC candidate Jahangir Shah threatening to slit Ajay Pal's throats. Take a listen. জাহাঙ্গীর খান এবং জাহাঙ্গীর খানের টিম ভয় পায়নি এবং আগামী দিনে ভয় পাবে না, সেটা মাথায় রাখতে হবে। আজকে ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের গঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। তাই সেই বিজেপি দালাল সিআরপিএফকে বলতে চাই, ক্ষমতা আছে গঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলের মানুষের জনসমুদ্র, জনস্রোত দেখে যাক। আমার একটা মায়েরা হলো দুর্গা, দুর্গা রূপে কিভাবে ওষুধকে বধ করতে হয় তারা জানে, একইভাবে বিজেপি দালাল সিআরপিএফকে কিভাবে জব্দ করতে হয়, কিভাবে টাইট করতে হয় সেটা ভালোভাবে জানে। তাই মায়েরা যখন সঙ্গে আছে, আমার বিশ্বাস ওদের এই ধমকানো চমকানো আমরা মেনে নেব না। তাই আমি চাইব যে আজকে 27 তারিখে 5টায় প্রচার শেষ, তাই হাতে আর তো একটা দিন আছে, আপনার একটা দিন, আর 29 তারিখটা। Now, viewers, not just Jahangir Khan, but also TMC spokesperson Riju Datta. He's been brazenly threatening the IPS officer on camera. Take a listen. पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं,
ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। Tonight at 7:30 p.m. on Super Prime Time with me, Gesu Bharadwaj, a Pahalgam-style attack orchestrated in Mumbai. We'll get you all the details on that. In fact, a major tiff between the TMC and the BJP over the deployment of Uttar Pradesh's IPS officer Ajay Pal Sharma, and also Iran's 3 conditions for truce with the United States that Donald Trump does not seem to be happy with. This and a lot more at 7:30 p.m. with me, Gesu Bharadwaj. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fights. The Ministry of Defense sent out a request for proposals to fit the advanced short-range air-to-air missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western borders day and night. Earlier upgrades added new radars, engines, and digital cockpits, but the short-range missiles stayed old. Now the ASRAAM brings fire-and-forget technology. Once the pilot locks on and fires, the missile finds the target on its own, even if the jet turns away to dodge enemy fire. It also works with helmet-mounted displays, so the pilot can just look at the enemy plane through the visor and the missile follows the eyes. This high off-bore sight ability lets the jet attack from strange angles without turning the whole plane first. This upgrade matters a lot because the region stays tense. Pakistan flies JF-17 jets with modern PL-10 missiles that reach farther and lock on quicker. China uses even better systems on its J-20 stealth fighters and other planes. In a real dogfight, the old MiG-29 with R-73 could lose the first shot. With ASRAAM, the Indian pilots get longer reach, faster lock, and higher chance to survive. The missile also works well against low-flying drones that are hard to see on radar. Many experts see drone swarms as the new big threat in air wars, and this upgrade gives the MiG-29 Singham rattles Trinamool cadre. Unprecedented security stunts TMC. Debating tonight at 9 p.m.
Presented by Amity University, ranked amongst the top 3% universities globally. Powered by RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies since 1820. TVS iQube, India's favorite family EV. चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। In the India Today Best Universities Survey, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi and National Law School Bengaluru. थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आरती और मसाला, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा से, MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, every day. The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fights. The Ministry of Defense sent out a request for proposals to fit the advanced short-range air-to-air missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western borders day and night. Earlier upgrades added new radars, engines, and digital cockpits, but the short-range missiles stayed old. Tonight at 7:30 p.m. on Super Prime Time with me, Gesu Bharadwaj, a Pahalgam-style attack orchestrated in Mumbai. We'll get you all the details on that. In fact, a major tiff between the TMC and the BJP over the deployment of Uttar Pradesh's IPS officer Ajay Pal Sharma, and also Iran's 3 conditions for truce with the United States that Donald Trump does not seem to be happy with. This and a lot more at 7:30 p.m. with me, Gesu Bharadwaj. Join International Institute of Hotel Management. Call 983-10-50,000. आर प्योर सूजी पास्ता, उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है, सबका राजा आर प्योर मसाला। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ स्वाद आया?
असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fights. The Ministry of Defense sent out a request for proposals to fit the advanced short-range air-to-air missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western borders day and night. Earlier upgrades added new radars, engines, and digital cockpits. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Right, welcome back to today's edition of our Global, in which we begin in Santa Marta, where hundreds of protesters, including indigenous communities and climate activists, are demanding an urgent and just transition away from fossil fuels, calling for stronger protections for vulnerable groups and accountability from polluting industries. Then we come to Indonesia, where a devastating train collision near Jakarta has left multiple people dead and dozens injured, raising fresh concerns over rail safety to the Chinese trains. Meanwhile, in Australia, it's taking a major policy step against big tech, proposing new laws to ensure digital platforms contribute financially to the survival of journalism. And then in the Strait of Hormuz, escalating tensions tied to regional conflict and energy security are adding further strain to already fragile global markets. All that and more in today's edition of our Global. But before that, more introduction. First, we are going to cover growing fossil fuel protests in Santa Marta, where activists are demanding a just and urgent energy transition. And then followed by the deadly train crash near Jakarta that has left multiple people dead and several injured. From there, we move to Australia, where a major crackdown on big tech aims to force platforms to fund and support journalism. And finally, tensions escalate in the Strait of Hormuz amid rising geopolitical friction. In fact, we are getting a breaking news connected with it. But before that, headlines first. Hundreds march in Santa Marta demanding a just transition away from fossil fuels and accountability for polluters.
Australia proposes new laws forcing tech giants to fund journalism or face a 2.25% revenue levy. A deadly collision near Jakarta leaves at least 14 dead and dozens injured as authorities investigate the cause. Dispute over the Strait of Hormuz escalates as Iran blames the United States for maritime disruptions amid a deepening energy crisis. All right, let's begin with the Colombian city of Santa Marta and massive protests happening there. The people are calling for a rapid end to fossil fuels, which means you cannot use petrol and diesel if these protesters get their way. And this is with delegates from around 50 countries gathering in this major conference on transitioning away from oil, gas and coal. Demonstrators include indigenous groups and climate activists, and they have demanded a just transition that protects vulnerable communities and hold polluting companies accountable for climate damage. The protests come as the international meeting seeks to build momentum on climate action, though it is not expected to produce binding commitments. Remember, we have already the mechanism of the COP, the conference of parties and all the nations there, but not much success with Trump there as at the helm in the United States. It's even more difficult. And let's look at what's happened in Colombia, in Santa Marta. Hundreds of protesters filled the streets of Colombia's Caribbean city of Santa Marta, calling for an end to fossil fuels and a faster shift to clean energy. Hoy marchamos por una transición energética justa, pedimos una transición con enfoque de género, donde las mujeres, las comunidades que han sido afectadas con desigualdades estructurales a lo largo de la historia, sean tenidas en cuenta en los procesos de tomas de decisiones frente a la transición energética. Pedimos que nuestros territorios sean vistos como sujetos vivos, que sea entendida la madre tierra como la fuente donde emana la vida. Marchers, including indigenous groups and climate activists, carried banners chanting slogans and demanded an end to oil exploration in the Amazon and fracking. Activists say the transition must be fair, putting women, indigenous communities, and those most affected by climate change at the center of the decision making. We must focus on the future of children, because otherwise, what are we doing at a fossil fuel treaty? What is it for? Who is it for? Well, it's not for the current generation because we're too deep down that road. It's for the future. And it's for who? It's for the children. The demonstrations come as delegations from around 50 countries gather in Santa Marta for a major conference focused on moving away from oil, gas and coal. The countries that are here take more serious commitments on and are able to publicly state those commitments on the pathway to transition away of fossil fuels. And also because this here is not, there is a lot of countries that are not represented here, that is signal to these other countries that they need to collaborate and they need to join the movement of transition away from fossil fuels. While the summit aims to build momentum, it is not expected to produce binding agreements, highlighting ongoing global divisions over how quickly to phase out fossil fuels. Protesters also took aim at major oil companies, staging Make Polluters Pay, actions accusing them of profiting, while communities face the consequences of climate damage. With global tensions and energy instability rising, campaigners say the message is urgent. The future depends on decisions made now and on holding both government and corporations accountable. All right, even as we are on some countries wanting to phase out fossil fuels, war has broken out between the UAE and Saudi Arabia, leading to the former walking out of the OPEC, which is Organization of Petroleum Exporting Countries. Remember, it's a Saudi-dominated body of oil exporting countries, and the UAE in a tiff with Saudi Arabia over
how to look at Iran war, how to take the issue forward, has decided in a huff to leave OPEC. In fact, the UAE has made this announcement through its official news agency WAM and said that they will leave OPEC effective May 1. The United Arab Emirates announcing this, leaving the oil cartel, and the statement says, and I quote, "This decision reflects the UAE's long-term strategic and economic vision and evolving energy profile, including accelerated investment in domestic energy production, and reinforces its commitment to a responsible, reliable, and forward-looking role in global energy markets." The UAE has said. Essentially, the UAE and Saudi Arabia are locked in a battle of domination over the Gulf countries' narrative, and we have seen, for example, UAE withdrawing its $3.5 billion loan to Pakistan, the Saudis immediately pitching in and filling that gap and giving that money to Pakistan, and now it's completely out in the open. The frost between UAE and Saudi Arabia leading to UAE announcing its exit from the OPEC. All right, another global breaking, and this is also a big one connected with the Islamic world, which is that Afghanistan has issued a demarch to Pakistan, and Kabul has summoned Pakistani chargé d'affaires and protested in strong words the airstrikes carried out by Pakistani forces on civilian targets and public facilities in the Kunar province. Remember, those airstrikes happened yesterday. The two nations are in a dogfight over the Durand Line. Kabul refuses to acknowledge Durand Line as the settled border between Afghanistan and Pakistan. And now this protest coming in by way of Afghan Foreign Ministry summoning the Pakistani chargé d'affaires and issuing a demarche on the airstrikes carried out, which led to many civilian injuries and a couple of deaths, particularly the targeting of Kunar University. All right, we had those couple of breakings, and now we come back to the story that was under focus, the second story, which is the accident or train accident that has been reported from Indonesia. A long-distance train rammed into a stationary commuter train near Jakarta. At least 14 people have been killed and over 80 injured. Rescue teams are still working to pull out those trapped inside the mangled coaches. The collision has once again raised concerns over the safety of Indonesia's aging rail network. Take a look. A devastating train collision near Jakarta has left at least 14 people dead and over 80 injured. The accident took place at Bekasi Timur station when the Argo Bromo Anggrek long-distance train slammed into the rear of a stationary commuter train. The impact was severe, with one coach designated for women passengers bearing the brunt of the collision and getting heavily damaged. Rescue teams rushed to the spot, working carefully to evacuate passengers and reach those trapped inside the wreckage. Officials say evacuation efforts have been slow and cautious as rescuers try to prevent further injuries. A total of 81 injured passengers have been shifted to nearby hospitals, while bodies are being identified. All 240 passengers aboard the long-distance train are reported safe, with casualties largely from the commuter coach. Authorities are now probing the cause of the crash, with early input suggesting a possible disruption on the rail line. Kami dalam proses evakuasi ini adalah berusaha segera dan secepat mungkin mengevakuasi seluruh penumpang yang masih ada di dalam gerbong kereta api. Semoga bisa kami roket kepada dan harapannya bisa dapat diselamatkan. The investigation has been handed over to the National Transportation Safety Committee to determine accountability and prevent future accidents or incidents. With a history of frequent rail accidents, the latest tragedy has once again exposed serious safety concerns on Indonesia's aging railway network.
Right, another ceasefire broken. Israel has carried out air strikes in southern Lebanon. Remember, with Prime Minister Netanyahu making that statement just last evening that this ceasefire cannot hold. Lebanon's state-run national news agency has said that Israeli air strikes have hit villages of Chakra, Tabanin and Kafra in southern Lebanon, and that's happened today. A drone strike also hit a motorcycle in the village of Mansouri. The Lebanese agency has reported no immediate confirmation about possible casualties. The strikes come after Israel's military asked residents of 16 southern villages to evacuate, saying Hezbollah is using the communities to launch attacks on Israeli troops in southern Lebanon. This is clearly a confirmation of no ceasefire on the Lebanese front insofar as the Middle East situation is concerned, and that's the reason why perhaps the talks between Iran and the United States have completely broken off. All right, now we move on to the next one under focus in this edition of our Global, which is Australia's decision to make big tech pay for news, with Prime Minister Anthony Albanese unveiling draft laws that would require platforms like Meta, Google and TikTok to strike deals with media outlets or face a levy of up to 2.25% of their local revenue. It's a move aimed at supporting journalism and strengthening media sustainability rather than raising government funds. Australia is moving to force big tech to pay for journalism, unveiling draft laws targeting platforms like Meta, Google and TikTok. The proposal would introduce a financial incentive system encouraging tech companies to strike deals with news organizations or face a taxation on their Australian revenue. Under the plan, the platforms that don't reach agreements could be charged 2.25% of local revenue, with discounts offered to those that fund journalism through commercial deals. We can announce today that our government is taking the next steps to ensure that Australian journalism is sustainable now and into the future by ensuring that large digital platforms cannot avoid their obligations under the new Media Bargaining Code. The news bargaining incentive will go to the next stage. We released a discussion paper in November. We had submissions in December, and today we're releasing an exposure draft of the legislation. That is an exposure draft which will encourage deal making between the platforms and news organisations. Prime Minister Anthony Albanese says the goal is to ensure media sustainability, not to raise government funds. This is not about government revenue. Every single dollar will go back to journalists, to pay for the journalism that you all produce here in the gallery, but in newsrooms right around the country, produce as well. This is important for the integrity of the system. We have engaged in extensive consultation. At this point, the three organisations, Meta, Google and TikTok as well, have been consulted with and will continue to engage with. But we want to see these deals done as were previously done under the previous regime. But it is a regime that did need reform, and that is precisely why we are doing it today. The government estimates the scheme could generate up to 250 million Australian dollars annually to be redistributed to news organisations based on journalist employment. We think that investment in journalism is critical to a healthy democracy. It matters. It's something that defines the way that Australian society operates. And frankly, if the work has been done by the people here at this press conference and in other places right around Australia, then your work needs to have a monetary value attached to it. It shouldn't just be able to be taken
by a large multinational corporation and used to generate profits for that organisation with no compensation appropriate for the people who produce that creative content. It marks Australia's second push to make digital giants pay for news, as earlier agreements have unravelled, with some platforms pulling news content from their services. Now that sounded like relevant, but moving on from Australia back to Middle East as global tensions threaten to rise over the continuing naval blockade on the Strait of Hormuz, despite the US and Iran having their ongoing ceasefire talks. Though of course in a stalemate, the Iranian ambassador has denied any responsibility and accountability for the resultant energy and economic crisis. This, as he claims, the responsibility for disruption, or says that the disruption is entirely the responsibility of the United States and its supporters. Global tensions simmer as countries continue to face a West Asia war consequent economic and energy crisis, which is now escalating amid US blockade on the Strait of Hormuz. This blockade, part of US's tactic to force Iran to agreeing into a ceasefire on US's terms. This blockade has furthered the energy crisis, prompting the attention and unites a call for action across countries. And now, after the United Nations Security Council met Monday to discuss safety and protection of waterways in the maritime domain, Iranian Ambassador Amir Saeed Iravani addressed members of the media to assert that Iran is not responsible for the closure of Strait of Hormuz. Responsibility for any disruption to maritime transport lies with the aggressors, the United States and its supporters. Any claims to the contrary is unfounded. This follows his claim earlier, justifying Iran's responses to the US as Iran's right and obligations under the law of sea. In contrast, Iran's measures in the Strait of Hormuz was grounded in Iran's right and obligation under the law of the sea and its national laws and regulations. Iran's lawful measures aim to strike an appropriate balance between security interests of the coastal state and the continued safe conduct of navigation in the Strait of Hormuz in a highly volatile environment. All of this comes as two regional officials reported that Iran offered to end its chokehold on the Strait of Hormuz if the US lifts its blockade on the country and ends the war, in a proposal that would postpone discussions on the Iran's nuclear program. US President Donald Trump seems unlikely to accept the offer, which was passed to the Americans by Pakistan, and would leave unresolved the disagreements that led to the US and Israel to go to war on Feb 28th. White House Press Secretary Caroline said Trump's national security team met Monday and was discussing Iran's proposal, but this entailed no detail on the outcome of the discussion. What's left to be seen hereon is how the US retorts to Iran's claims and the implications, if any, to befall the already worsening energy crisis amid the Strait of Hormuz blockade. All right, from Middle East back to the Pacific, and that's where action seems to be happening. South Korea and New Zealand have come together to carry out joint military exercises, amphibious exercises over the last 1 week. And South Korea's defense ministry has said that the troops, or their troops, were joined in by a platoon of New Zealand Army. Remember, New Zealand is a small country, platoon is a big size there. And the exercises featured more than 3,000 combined forces from South Korea, South Korean Navy, Air Force and Marines. So 3,000 troops of South Korea and a platoon strength of New Zealand. They have signed a free trade agreement with us. These are the pictures of the amphibious exercises there. And they want to send across a message together to China perhaps, because that's the reigning power in the geography. And amphibious exercises there, essentially South Korean troops with a smattering of New Zealand with the Kiwis, and announcing a joint military drill
there, the two nations, New Zealand and South Korea. Tremendous firepower there of the amphibious force. Or that was in Pohang of South Korea, joint military exercises between them and the Kiwis. Coming out of that and short break, but coming up on the other side, more details emerge in the Pahalgam-like lone wolf attack in Mumbai, in which the attacker seems completely radicalized and is following or was following the Islamic State ideology, under the influence of which he attacked those two security men in the Mira Bhayandar area or suburb of Mumbai. Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. In the India Today Best Universities Survey, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता उबालो, मिलाओ और खाओ, 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU सोच बदलो और बैंक भी। प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरी राजा। The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fights. The Ministry of Defense sent out a request for proposals to fit the advanced short-range air-to-air missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western borders day and night.
Earlier upgrades added new radars, engines, and digital cockpits, but the short-range missiles stayed old. Now the ASRAAM brings fire-and-forget technology. Join International Institute of Hotel Management. Call 983-10-50,000. Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day. AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। क्या बात है? स्वादिष्ट पकोड़े और परेशान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर सूजी पास्ता, उबालो मिलाओ और खाओ, 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है, सबका राजा आर प्योर मसाला। अनीस, घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fight. From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Ladies and gentlemen, thank you for joining us on This Is Exclusive. Few hours to go before Bengal votes in the all-critical Phase 2. And that will decide whether Trinamool Congress is finally ousted in the state of West Bengal or whether the BJP really has a chance. But there is one person who's making the headlines even before the elections, and he's been the face of the final countdown before Phase 2. And his name is Ajaypal Sharma. He's popularly called the Singham of Uttar Pradesh, an encounter specialist who the opposition does not like. So you have encounter specialists, some who are loved by the government, some who are hated by the opposition, and he's one of them. And he's in Bengal. He's a no-nonsense kind of person, and he's very, 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 very aggressive, something that the Trinamool Congress does not like. We have videos of him in Bengal and why the Trinamool Congress is upset with him. And we have some exclusive details of the Kalma stabbings right outside Mumbai. You've had this man called Ansari, the attacker, self-radicalized attacker called Zubair Ansari, returned from America in the wee hours of this morning, went around asking for directions to the mosque, asked people if they were Hindus, and if they were Hindus, he just stabbed them. He asked them if they could recite the Kalma, couldn't, so stabbed them. And finally, ladies and gentlemen, the story that went unreported from the national capital, they called him Bihari, and a policeman, a Delhi cop, called him a Bihari and then shot him dead. Shot dead for being a Bihari, and for some reason the Latins media hasn't even covered this story from the national capital. That and more coming up. Here are the headlines. This is exclusive.
Trinamool Congress extremely edgy about Singham, Ajaypal Sharma. And the man that the Singham is going after, Jahangir Khan, a mafia don, Abhishek Banerjee's aide, says that he will slit their throat. He says he will slit the throat of election observers, including Singham Ajaypal Sharma. Pahalgam-like attack, stabbing spree in Mumbai, right outside Mumbai. The man on your screen, Zubair Ansari, the attacker, asked people if they could recite the kalma. They couldn't. He stabbed them in the middle of the night. Details emerge. He was self-radicalized, returned from the USA, wanted Palestine, backed Hamas, fought for Gaza. Details of the self-radicalized Ansari on Republic. And there's been an impact in Mumbai, in Bengal, just before the first vote is cast in phase 2. There's been an impact because of this police officer, Ajaypal Sharma. The BDO in Falta Diamond Harbour. Diamond Harbour is Abhishek Banerjee's stronghold, and that is where this particular cop was seen doing the rounds. The BDO there has been changed. He's called the Joint BDO. The Joint BDO has been removed for non-cooperation with this cop called Ajaypal Sharma, Singham from Uttar Pradesh. That has just happened, and there's also a complaint filed against Singham. So it's a battle just before the second phase. They're fighting it out. It's Trinamool Congress versus Singham, and it's Singham versus the pro-TMC lobby and establishment. So it is a fight between the centre and Bengal ahead of elections. He's going after the mafia dons, and the Trinamool Congress is not liking it. The Falta BDO, the joint BDO there in that particular area called Falta in Diamond Harbour, has been removed for non-cooperation with this particular officer called Ajaypal Sharma. That's the breaking news update coming in. So he's making waves. He's not being liked by the Trinamool Congress. They tried to gerao him, they tried to stop him, they tried to hold protests, did not work. Take a look at the videos of this particular man. This is why they are so wary about him. Ajaypal Sharma, a 2011 batch IPS officer, UP cadre. Even the Uttar Pradesh opposition, primarily consisting the Samajwadi Party, does not like him. Take a look at how he's getting them all rattled in Bengal. आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तुम्हारा रजिस्टर होगा ना? आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं तुम्हारा ऐसे कह रहा कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? एक महीना हो गया कि नहीं सर मेरा तो घर यहाँ तो नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है उसके अंदर? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म इतना हल्के ले रहे हो ना। केसेस सबके रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दौड़ते रहना थोड़ा दीजिए। बोल रहा था तुम पोलाइटली बोलो, भद्र में बोलो। मैं नहीं पता वो कहाँ रहता है, वो नहीं पता। उसका मोबाइल नंबर क्या है? उसका कहीं तो होगा मोबाइल नंबर। हाँ, नोट करिए। Those were pictures that came in of this particular cop in action, looking for Jahangir Khan. Jahangir Khan is a Trinamool Congress leader, believed to also be a mafia don running a racket for the Trinamool Congress. That's the allegation that the BJP has made on record.
Take a look at Jahangir Khan's response to all of this in Bengal, to the march of the police, to what Ajaypal Sharma has been doing, and the last few hours. Jahangir Khan was caught on camera issuing a death threat to security officials, telling them that we will slit your throat after elections. Take a look. জাহাঙ্গীর খান এবং জাহাঙ্গীর খানের টিম ভয় পায়নি এবং আগামী দিনে ভয় পাবে না, সেটা মাথায় রাখতে হবে। আজকে ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের গঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। তাই সেই বিজেপি দালাল সিআরপিএফকে বলতে চাই, ক্ষমতা আছে গঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষের জনসমুদ্র, জনস্রোত দেখে যাক। আমার একটা মায়েরা হলো দুর্গা, দুর্গা রূপে কিভাবে ওষুধ দিয়ে বধ করতে হয় তারা জানে, একইভাবে বিজেপি দালাল সিআরপিকে কিভাবে জব্দ করতে হয়, কিভাবে টাইট করতে হয় সেটা ভালোভাবে জানে। তাই মায়েরা যখন সঙ্গে আছে, আমার বিশ্বাস ওদের এই ধমকানো চমকানো আমরা মেনে নেব না। তাই আমি চাই। So that's the story developing in the state of Bengal, and we will be live starting 6 a.m. tomorrow when Bengal goes to polls in phase 2. 142 seats in phase 2 of the Bengal elections. Ladies and gentlemen, let's switch now and get you the visuals, the horrible images from right outside Mumbai. An incident that reminded us of the Pahalgam terror attack, because like in Pahalgam, you had an attacker going loose, asking people what their religion was and attacking them. That's the video of the attack. Pahalgam rerun in Mumbai, right outside Mumbai. This is in Mira Road, right outside Mumbai, where you can see this attacker, Zubair Ansari, there, stabbing people, running behind Hindus and stabbing them. He asked them what their religion was, asked them, aren't you a Hindu? Can you recite the kalma? And when they said they couldn't, stabbed them in the middle of the night. The attack itself reported at 3 a.m. this morning, and that's the video of the attacker. Republic has accessed more details of this self-radicalized Zubair Ansari. He asked people to recite the kalma, which is an Islamic declaration of faith, a request that they reportedly denied. He was living alone. He reportedly had returned from the USA, linked to an ISIS module. And the case has now been handed over to the Maharashtra ATS. It is investigating a possible lone wolf terror angle to this particular attack. The attack itself between 3 to 4 a.m. this morning, right outside Mumbai, where Ansari allegedly approached 2 guards, namely Rajkumar Mishra and Subroto Sen, at a construction site. Republic gets exclusive details. In fact, we also have a graphic of what was a picture rather of what was hung outside his door. We'll get you details of that and also details of what the victim has said to Republic TV in this particular case. Let's play those details out. That's the note that was placed on the attacker's door. It says, read Kul Huwu Allahu Ahad. Say Bismillah. Do salam, then enter. That was a note that was reportedly placed on the door of Zubair Ansari. Zubair Ansari, the attacker, in the attack outside Mumbai. The Maharashtra ATS, meanwhile, ladies and gentlemen, is also investigating the financial transactions of Zubair Ansari, the accused in the stabbings, the Kalma stabbings right outside Mumbai. He's a resident of Mira Road, Nayanagar, right outside Mumbai. He had travelled overseas several times and was residing in the United States of America. The ATS in Maharashtra is conducting an investigation into all these aspects and whether there's any financial link between him and anyone else.
mostly in America. That's the angle now. They're looking out rather, on whether he had links to anybody there. That's the breaking news update. They're probing the foreign trips. We also spoke to the eyewitnesses. We went there to the location where the attack took place. This is what people told us there, the witnesses told us there, and the reports that were filed by the Republic team. मैं बाहर गया था काम से, तो घर जा रहा था, तो उतने में वॉचमैन अंदर घुसा ना, तो वॉचमैन लोग डरे हुए थे, मेरे को रुकाए, बोले ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैं डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ा, चौकी लेके गया फ़ौरन उसको। फिर उसने पुलिस चौकी में सब बताया। फिर उसने बोला कि किसका हाथ पकड़े थे? पहले वॉचमैन का लिया, क्योंकि जो दूसरा लगा सुबह था वो अंदर छुपा हुआ था, मतलब डर के मारे छुपा था अंदर, बाहर नहीं आ रहा था। तो वॉचमैन ने उन लोगों ने बोले कि वो अंदर ही है, तो मैं उसको ढूंढा, मिला तो उसको ही पकड़ के मैं चौकी लेके गया। फिर पुलिस वाले लोग ने बोले कि उसको जाके तेम्बा हॉस्पिटल में पहुंचा दो। तेम्बा हॉस्पिटल में पहुंचा के मैं आ गया अपना। उस समय जो राजकुमार थे मिश्रा, उस समय थे वहाँ पे? नहीं, वो टाइम थे उनको, वो सुब्रतो की जान बचाने के लिए उसने उसको भी चाकू मार दिया। ऐसा बोल रहे। अच्छा, कौन बोल रहा था? वॉचमैन लोग ही बोल रहे थे। तो सुब्रतो कहाँ छुपा था? सुब्रतो यहाँ पे बाहर बैठा था। तो बाहर हुआ था पहले। वो अपनी जान बचाते बचाते अंदर भागा। अंदर जो मिश्रा जी करके वो हेड है यहाँ के, उन लोग के हेड है, सुपरवाइजर है। तो उनने इन लोग की जान बचाने के लिए तो उसको भी मार दिया चाकू। उस समय कैसी स्थिति, कैसी उनका हालात था राजकुमार मिश्रा का? वो मैं देखा नहीं। और सुब्रतो को ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी एक ही पीठ पे लगी थी खाली। कुछ बोल रहा था सुब्रतो? हाँ, वो बोल रहा था, कुछ तो हुआ था, बोल रहा था साइको था, कुछ पागल था, आके मार रहा था। मैं इस समय आरोपी जुबेर अंसारी के घर के बाहर हूँ। तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से रूम नंबर 304, ये तस्वीरें देखिए। और जो यहाँ नोटिस लगाया गया है, ये पुलिस द्वारा नोटिस लगाया गया है और इस रूम को सील कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो नोटिस लगाया गया है, ये आरोपी जुबेर अंसारी ने लगाया है और इसमें जो लिखा है वो हम बता रहे हैं। दारूद शरीफ एक बार बोलो, बिस्मिल्लाह कहो, सलाम करो, फिर अंदर आओ। मतलब साफ तौर से है, गैर मुस्लिम जुबेर अंसारी घर नहीं जा सकता है। ये कहने के बाद तब जाकर आपको एंट्री मिलेगी। तो साफ तौर से है, जुबेर अंसारी कितना कट्टर है, ये साफ तौर से यहाँ पे जो नोटिस लगाया गया है, ये छोटा सा नोटिस यहाँ चिपकाया गया है। ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से। और यहाँ पे साफ तौर से लिखा है कि सलाम करो यहाँ पर, और आते यहाँ पे कुछ उर्दू में भी लिखा गया है। तो कहीं न कहीं ये बताता है कि किस तरह से जुबेर अंसारी कट्टर है। और जिस तरह से महाराष्ट्र एटीएस के जांच में सामने आया कि जो नोट्स मिले हैं उसमें ISI, साथ ही जिहाद और कई ऐसी चीज़ें मिले हैं जिसको लेकर महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आरोपी जुबेर अंसारी कितना कट्टर है। और यहाँ पे नोटिस लगाया गया है कि आपको ये कहना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे घर के अंदर एंट्री मिलेगी। फिलहाल महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है, NIA जांच कर रही है और लगातार इस मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं। Next, we shift focus to a story from Delhi that largely went unreported by the media here, the Lutyens media. What we call the Lutyens media went completely silent on how a Delhi police officer was arrested after he allegedly shot dead a 21-year-old man and injured another following an altercation over some noise on the street in Dwarka, New Delhi. The head constable, identified by his first name Neeraj, is posted with the Delhi Police Special Cell, and according to officials, the murder took place when the police officer objected to a group of people who were returning from an event, and he claimed they were making noise in the street in front of his house. He stepped out, got into a fight, and then removed his Glock pistol, shot at one of the victims right in the chest. The bullet pierced the victim's chest, struck a second man who was critically injured. The victim's family has alleged that the shooting was motivated, and he called them Biharis, said, "You are a Bihari," and shot him dead. That's the allegation being made by the family. Now the police is investigating into what has been claimed by the family. The accused was off duty at the point. Officials say they're also investigating whether he used his service pistol in the crime. A Glock pistol was used. Investigation is on. Republic spoke to the victim's family.
And this is what they alleged while speaking to Republic on the identity. They said the Bihari identity was used to attack the victim in this case. Father of the victim Pandav Kumar with us, who died in the early hours of Sunday around 2 a.m., who was shot dead by a constable of Special Cell of Delhi Police. अंकल जी, एक बात बताइए कि पांडव, पहले तो बताइए किस तरीके का लड़का था? दोस्त का बर्थडे में गया 7-8 आदमी, खाना वाना खा के करीब 1:30 बज गया मेन रोड पे गया। मेन रोड के सामने में घर पर दूसरी बस उतरा और बोला बिहारी ये प्लॉट खरीद लिया है, घर बना लिया है, गंद फैला दिया है। एक आदमी तो रगड़ दिया, भाग गया, सामान देखा न तो भाग गया डर से। उधर से आया था, पकड़ लिया, मोटरसाइकिल नहीं स्टार्ट लिया, सामने में गोली भरा और सामने में बैरल है पर रख के तब मारा सेट कैसे कर। इसका पार से पार हो के पीछा आदमी बला के लग गया। उस दिन दियाल में भर्ती है। माफी मांगा, हम कुछ नहीं किया है, कल के नहीं बिहारी को छोड़ेंगे नहीं। बिहारी को बहुत गंद मचा दिया है, 7-8 को गाड़ी दिया है, छोड़ेंगे हमने। तो आप कह रहे हैं कि वो बिहारी था, इस वजह से उसने कांस्टेबल ने क्रोध में आके गोली मारी उसको? हाँ, क्रोध मारा। ऊपर से दूसरी बस उतरा, सीसी कैमरा लगा है दोनों साइड, और उतर के और तकर बाद जाके सामने में गोली भरा है। 2 पिस्टल था, हम बोला हमारे भतिया 2 पिस्टल, और तब जाके डर से तो भाग गया 1-2 आदमी। उतर के आगे माफी मांगा, हम कुछ नहीं किया, हम अपना हम गप करते हैं। कल के बिहारी सारे ये बिहारी ने सब गंद मचा दिया है, 10-12 को गाड़ी दिया है, और जमीन लेके प्लॉट बना लिया है। बहुत बिहारी का अति हो गया है, पैसा वाला हो गया है। Meanwhile, there was also a protest march that broke out following the shooting of a youth. These are pictures of the protests that were carried out in the national capital, where people asked the question, is it a crime to be a Bihari? This is what happened in the national capital. Sarthak is joining us live. Sarthak, what are the facts of this case on the claim being made by the family that the boy was called Bihari and shot? Either way, why would a police officer shoot someone in the chest point blank? Yes, Niranjan, this is as much as it sounds unbelievable. The family members alleges that this was the primary reason why he got aggressive. He shot the 21-year-old boy Pandav Kumar right in the chest. They were returning back home at around 2 a.m. On Sunday morning from a birthday party when they got into a verbal altercation with this man who had issues with them making some noise, and then he started, allegedly according to the family, he started making some racial slurs at them. He started calling them Bihari, and how problematic it is to be a Bihari, and then eventually that verbal altercation turned into a physical scuffle, and eventually he went inside the house. He came out with a service revolver and he shot at these 3 boys who were sitting on a bike. The shot went through Pandav Kumar's chest. He died at the spot, and the second man, Krishna, got struck by that bullet. He is also critically injured. He is at this point in the hospital. The friends of Pandav Kumar, the victim, say that it was his some form of hatred towards Biharis, due to which he became extremely aggressive and decided to fire a shot at them. At this point, the family is demanding
strict actions to be taken against the constable. Just to remind the viewers, he has been taken into custody by Delhi police. Initially, after the incident, he was absconding. Delhi police took cognizance of this. They found him. He has been taken into custody. And further, what was the actual reason for which he made the shot? That is still being investigated by Delhi police. However, the family alleges that it was his personal hatred towards Bihari that made him extremely aggressive, and that was the reason why he shot a fire at Coming them. in, Sarthak, I have a breaking news update. I'll have to cut out of this for a bit. Donald Trump has claimed that Iran wants to open the Strait of Hormuz. He said Iran has just informed America that they are in a state of collapse and that they want to open the Strait of Hormuz as soon as possible as they try to figure out their leadership situation, which I believe they will be able to do. Thank you for your attention to this matter. So there's a big claim. Donald Trump once again saying that Iran wants to open the Strait of Hormuz, wants America to open the Strait of Hormuz as soon as possible. So it's an indication, perhaps, that maybe Donald Trump will be able to remove that blockade. Is that the hint, the bigger hint? He says Iran has requested America to open the Hormuz Strait as soon as possible as they figure out their leadership situation. He claims that Iran has told America that they're in a state of collapse. Now, this claim comes on the back of the reports that Americans and American leaders kept claiming that Iran is on the brink and that energy had been squeezed completely and that they were really struggling because of the blockade. So we will have to wait and watch how this plays out. Trump claiming Iran wants the Strait of Hormuz to be open. Will that mean they will open the Strait of Hormuz and end the blockade? We will keep an eye out on that. Ladies and gentlemen, that's it on this edition of This Is Exclusive. We're taking a break, but tomorrow is the big day. Tomorrow's exit poll day. Tomorrow is the final phase of the elections, the mini general election, phase 2 of Bengal. 142 seats. Republic will be live. Stay tuned. In the India Today Best Universities Survey, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. साथी हाथ बढ़ाना साथी रे जिंदल साथी सील साथी रे अरे सॉलिड इसकी फील है जिंदल साथी सील है दोस्त की स्टेनलेस स्टील है क्वालिटी में दम है साथी रे बिजनेस करेगा ग्रो साथी रे टाइमलेस इसका लुक है साथी रे और जिंदल साथी जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है। तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें। जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आटे और मसाला। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। प्यास बुझाए, ठंडक लाए,
सबको भाई जीरा सिप MTH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH Corrector, the taste of success. आर प्योर सूजी पास्ता उबालो मिलाओ और खाओ 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। The Indian Air Force is giving its old MiG-29 fighter jets a powerful new weapon from Britain that turns them into modern fighters ready for today's battles. MiG-29s first came to India in the 1980s, have flown many missions along the tough borders with China and Pakistan. Now they are getting equipped with British ASRAAM missiles that make them as strong as NATO planes in close fights. The Ministry of Defense sent out a request for proposals to fit the Advanced Short-Range Air-to-Air Missile on the MiG-29 UPG version. This British missile from the company MBDA replaces the old Russian R-73 that pilots used for years. The R-73 could only reach targets 10 to 15 kilometers away, which forced pilots to fly too close to the enemy and take big risks. The ASRAAM changes all that. It can hit targets more than 25 kilometers away, almost double the old range. It flies at Mach 3 speed and uses a smart infrared seeker that ignores enemy flares and jamming better than before. The Indian Air Force flies more than 55 of these MiG-29 UPG jets in frontline squadrons. These planes guard the northern and western Hello and a very warm welcome. You're watching Super Prime Time on Republic TV. I'm Gesu Bharadwaj. And viewers, starting first, there is a Pahalgam style attack that has taken place in Mumbai. In fact, we're getting you all the details. The attacker first asked the people if they were Hindus. He even asked them whether or not they could read the Kalma. And when they could not, he stabbed them. We're getting you all the details on that. But first, here's a check on your headlines for the hour. Take a look. TMC versus BJP over appointment of Uttar Pradesh's top police Ajay Pal Sharma as West Bengal poll observer. TMC says Bengal is no Uttar Pradesh. TMC candidate Jahangir Khan's open death threat to BJP over CRPF deployments in Bengal. TMC completely nervous after security measures in Bengal begin to stage protest against IPS officer deputed for Bengal polls. In a Pahalgam-style attack, Mumbai man stabbed security guard after ISIS-linked material found at accused home. A Pahalgam-style attack in Maharashtra. Victim reveals he was stabbed after asked to recite the Kalma. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis hints at a bigger controversy over Pahalgam-style attack, says thorough investigation is underway. Anil Ambani in bigger trouble now. ED attaches fresh assets worth rupees 3,034 crore, properties of Reliance Communications and infra attached.
Viewers, now starting first with the breaking development that we're getting in. Now, a police complaint has been filed against the IPS officer Ajay Pal Sharma and the Central Forces for barging into the houses of people at night and even assaulting women in Falta. Now, this complaint has been filed by one of the victims, one of the women who alleges that there was an assault that took place when the IPS officer Ajay Pal Sharma entered and barged into people's houses in the silence of the night. And in fact, this registration of complaint is also against the Central Forces, and this comes from Falta. Viewers, getting in some more breaking development, and this time around US President Donald Trump says that Iran has asked the US to open the Strait of Hormuz, and Trump says that he posted this claim on his social media, claiming that Iran wants the United States to open the Strait of Hormuz. That's exactly what he says. He, in fact, also goes on to say that Iran has just informed us that they are in a state of collapse. A big statement that has been made by US President Donald Trump. He goes on to say that they want the United States to open the Strait of Hormuz as soon as possible as they try to figure out their leadership situation. Now, in fact, Trump also says that he believes that they will be able to figure out their leadership situation. A huge claim that's being made by US President Donald Trump, who took to his social media on Truth Social and said that Iran wants the United States to reopen the Strait of Hormuz. Viewers, now as India is going through a disturbing phase of violence in the West Bengal elections within its own cities, we're also getting in another development that comes in from Mumbai. Now, from Pahalgam to Mumbai's Mira Road, the pattern raises uncomfortable questions. In a chilling incident, 2 security guards were allegedly attacked after being asked to recite the kalma, and when they could not do so, they were brutally stabbed. The accused, Zubair Ansari, reportedly armed with a knife, targeted them solely based on their identity. In fact, handwritten notes have also been recovered from the accused person's home with words like ISIS, Lone Wolf and Jihad written on them that have only deepened the seriousness of the case, now being probed for possible terror links. In fact, viewers, also political reactions have exploded with sharp accusations and even counter-accusations. But beyond the politics, the core question remains. Is this an isolated act of violence or a sign of a deeper, more dangerous radicalization? And more importantly, how many more warnings before decisive action follows? Take a look at everything that unfolded and the state's response. Kalma killing yet again, now in urban spaces as well. A shocking incident of violence has been reported from Mumbai's Mira Road, where 2 private security guards were stabbed. देखिए, मैं आरोपी जुबेर अंसारी घर के बाहर मौजूद तस्वीरें में दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर एटीएस ने बाकायदा सील किया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महानगर पालिका और नया नगर पुलिस ने इसको सील किया है, और साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस का स्टैंप है और इसको घर को सील कर दिया गया है। ये है जुबेर अंसारी के घर। जुबेर अंसारी इसी घर में 1 साल से रह रहा था और अकेले रह रहा था। यहीं से निकला है और यहाँ से कुछ ही दूर पे, लगभग हम कह सकते हैं 150 मीटर दूरी पे है जहाँ पे घटना स्थल है, जहाँ पे जाता है और वहाँ पर गार्डों का नाम पूछता है और नाम पूछने के बाद धर्म पूछता है, कलमा पढ़ने के लिए बोलता है। इसके बाद जो हिंदू गार्ड थे उनके ऊपर चाकू से हमला करता है। CCTV visuals show the accused, identified as Zeb Zubair Ansari, confronted the guards asking them to recite the kalma. When the guards said they don't know how to recite kalma, the accused turned violent and stabbed them with a sharp weapon. One of the victims, Subrata Sen, sustained minor stab injuries, while Rajkumar Mishra suffered serious stab wounds and remains in critical condition. Both victims were rushed to hospital immediately, where doctors say Sen is stable while Rajkumar Mishra continues to be under intensive care. Police have registered a case under Section 109 and 118. Given the nature and the gravity of the attack, the investigation has now been handed over to the Anti-Terrorism Squad. The accused was born in the Kurla area of Mumbai and used to live alone. The 31-year-old accused Zubair Ansari reportedly went to the US for his education in the year 2000 and returned in 2019 due to lack of employment.
During searches at the residence, investigators reportedly recovered handwritten notes containing terms like ISIS, lone wolf and jihad, raising suspicions of radicalization. There were also notes containing quotes like Allah will guide you. A note was also found at the entrance gate of the attacker's residence. Eyewitnesses on the spot shared exclusive details with Republic. जब घटना हुआ था उसके बाद जो है सुब्रतो को इन्होंने बचाया था, इन्होंने हॉस्पिटल ले गया था, नायाब नाम है। कब हुआ था और कब कहाँ जा रहे थे आप? मैं बाहर गया था काम से, तो घर जा रहा था, तो उतने में वॉचमैन अंदर घुसा ना, तो वॉचमैन लोग डरे हुए थे, मेरे को रुकाए, बोले ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैं डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ा, चौकी लेके गया फ़ौरन उसको। फिर उसने पुलिस चौकी में सब बताया। फिर उसने बोला कि किसका हाथ पकड़े थे? पहले वॉचमैन का लिया, क्योंकि जो दूसरा लगा सुब्रा था वो अंदर छुपा हुआ था, मतलब डर के मारे छुपा था अंदर, बाहर नहीं आ रहा था। तो वॉचमैन ने उन लोगों ने बोले कि वो अंदर ही है, तो मैं उसको ढूंढा, मिला तो उसको ही पकड़ के मैं चौकी लेके गया। फिर पुलिस वाले लोग ने बोले कि उसको जाके तेम्बा हॉस्पिटल में पहुंचा दो। तेम्बा हॉस्पिटल में पहुंचा के मैं आ गया अपना। Officials are now examining whether the accused acted alone or had any links to a larger network. The incident has triggered sharp political reactions, with Maharashtra Chief Minister Fadnavis calling it a case of a self-radicalization and assuring a thorough probe. मुळामध्ये एकूण हे जे प्रकरण आहे हे बघितलं तर सेल्फ रॅडिकलायझेशनचे प्रकरण आहे। मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातनं रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे, अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे। त्याला पकडलेलं आहे। आता ATS आणि NIAची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल। याचं कुटुंब हे परदेशात आहे, ते अमेरिकेमध्ये आहे, हाही अनेक वर्ष परदेशात राहिलेला आहे। त्यानंतर इथे आल्यानंतर पहिल्यांदा कुर्ल्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर नवानगरला तो राहायला आला। त्यामुळे आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील। Congress leader Muzaffar Hussain, however, have stated that accused has no religion. मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोई भी क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता, उसे किसी मजहब के साथ मत जोड़िए। उसने किस पर हमला किया वो एक अलग मजहब का है, इस तरह से कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली बातें कोई ना करें। And to which BJP spokesperson Shehzad Poonawalla has launched a sharp attack, saying Congress always tries to whitewash and radicalize. Congress is the modern day representation of Muslim League. It is behaving like Jinnah, who divided India on communal lines. Same thing Congress is doing. They have once said that the first right of resources of this country belongs to Muslims. They have taken away SC, ST, OBC reservations and given it to the Muslim community on religious lines, which is against Ambedkar ji and against the constitution. They have given reservation to Muslims in civil contracts also, which is against the constitutional spirit. And now also they are doing this only to rub salt into the wounds of the Hindu community. As investigation continues, the incident, the Pahalgam attack, has once again raised serious concerns over radicalization and jihadi attacks, now spilling in urban spaces as well. Viewers, now shifting focus. This is no longer just an election battle. It's turning into a full-blown confrontation on the ground in West Bengal. A high-profile IPS officer, Ajay Sharma, leading raids, explosive threats from a ruling party leader, counter warnings from central forces, and now even the courts stepping in. As the campaign ends, the fight has only intensified, with law enforcement, politics and power colliding head-on. Our next report tracks how the Bengal battleground has spiraled from crackdowns to open threats, and why this election is now about far more than just votes and what meets the eye. With central forces on high alert, the Calcutta High Court stepping in, and tensions rising across districts.
West Bengal elections and a Singham-style crackdown is now dominating headlines. IPS officer Ajay Pal Sharma, deployed as poll observer, is leading ground operations amid rising tensions. On the final day of campaigning, a major crackdown. Raids conducted in hideouts linked to TMC candidate Jahangir in Falta constituency. Heavy deployment of SSB, FST and QRT teams with the operation led by Ajay Pal Sharma himself. Jahangir Khan, accused in past violence cases including alleged stone pelting on BJP leaders, is also seen as politically linked to Abhishek Banerjee. Meanwhile, central forces intensify presence on ground. CRPF launching Operation Trust, ensuring 24/7 domination, Naka checking and security in sensitive zones. But the situation escalated dramatically after explosive threats from TMC leader Jahangir Khan targeting the officer and the central forces. কিন্তু পৃথিবীর ধমকানো চমকানোতে জাহাঙ্গীর খান এবং জাহাঙ্গীর খানের টিম ভয় পায়নি এবং আগামী দিনে ভয় পাবে না, সেটা মাথায় রাখতে হবে। আজকে ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। The threat narrative deepens with another warning directed at Sharma. TMC voices warning that after results, action will be taken against the officer even beyond state lines. ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। On the other side, Sharma has issued clear warning against intimidation and unlawful activity during polling. आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। The political war has now intensified with Akhilesh Yadav launching a sharp attack. Meanwhile, illegal battle also unfolds, the Calcutta High Court refusing to intervene in petitions against Sharma, saying no interference till April 29th, giving a temporary relief to the officer amid mounting controversy. Ground tensions remain high with complaints of faulty CCTV at polling booths in Diamond Harbour and heightened vigilance across districts. NIA teams deployed across Bengal have been tracking illegal arms, crude bombs and are ready for rapid response. Even visuals from Bhawanipur show posters of Chief Minister Mamata Banerjee being covered amid election code enforcement. From raids to threats to political attacks and legal scrutiny, the Bengal election battle has gone far beyond campaigning.
Viewers, now in a major breakthrough for the Indian security forces, Salim Dola, a high-ranking associate of Dawood Ibrahim, was deported from Turkey to India just this morning. He arrived in Delhi atop a special plane, was first taken away by the NCB and will also be handed over to the Mumbai police later. Take a look. Salim Dola, drug kingpin who was apprehended in Istanbul, Turkey following a high-stake coordinated operation between Indian and international intelligence wings, arrived at the Delhi Technical Airport today under heavy security. A Dongri resident, Dola had been operating from abroad after fleeing India nearly a decade ago. Running a multi-state narcotics network, is a close aide of Dawood Ibrahim. Upon his arrival in the national capital, Dola was immediately taken into custody by intelligence officials and is currently undergoing intensive interrogation at an undisclosed location. Authorities seized a Kuwaiti ID and a Bulgarian passport from Salim Dola, exposing the sophisticated alias used to facilitate his international movement. A known figure to narcotics agencies, Dola has been linked to international cartels and was first arrested in 1998 with 40 kg